Okay, well, so today's topic is the hydroponic technology, a technology which can change the face of Indian agriculture industry. So, how it will change the face of Indian agriculture, and why we need to change the face of Indian agriculture? What is the need of that? What are the challenges we are facing? Farmers are facing, so that we are shifting or growing in the soil. We are shifting towards the hydroponics system. So these are some of the issues what the farmers are first facing. That is the why we are shifting to the hydroponics. So now first we will see what are the issues. First is the drought conditions. Sometimes the rain will not be there, so the plant will not get the sufficient water, and unpredictable weather. We know that sometimes it goes very hot, sometimes it is very cold. So these are unpredictable weather conditions which hinders us to grow the crop outside in the soil. Rising temperature is one of the factor which is not allow the farmer to grow in the outside in the soil. So what happens with the rising temperature? मोटिलिटी हो सकती है. मोटिलिटी होने से क्या होगा, पूरे प्लांट के ऊपर इफेक्ट आता है. प्लांट अगर अच्छे से ग्रो नहीं होगा तो उसका जो क्वालिटी है, जो फ्रूट का क्वालिटी है या प्लांट का क्वालिटी है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, फ्रूटिंग ग्रोथ है, वो सारा खराब हो सकता है. तो पोल्यूटेड वाटर सिस्टम्स है, जो कि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं और एट दी एंड वो कहाँ चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर में जाते हैं. या बहुत सारी फैक्ट्रीज है जिनका पोल्यूशन मतलब जो उनका जो इन बाहर आता है वो और पूरा वो वाटर को पोल्यूट करते हैं. तो अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, लैंड नहीं मिल रहा है फार्मर को. अभी लैंड नहीं मिल रहा है कि हम उतना बड़ा एक फार्म एक लैंड को यूज करें और प्लांट्स कल्टिवेट करें. लैंड एक्विजिशन इज डिफिकल्ट. माल न्यूट्रिशन हो रहा है और ग्रोइंग पॉपुलेशन हो रही है, और ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, सफिशिएंटली फूड प्रोवाइड नहीं हो रहा है सबको. तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो हम इसको ओवरकम करने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं जो हम एक फार्मर को क्या होगा, बेनिफिट भी होगा और वो अच्छे से अपना क्रॉप भी कल्टिवेट कर सकता है. अब हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक वायबल फ्यूचर क्यों है एग्रीकल्चर का? वो इसलिए है क्योंकि हमें पता है ये क्या है, ये वाटर बेस्ड सिस्टम है. वाटर बेस्ड सिस्टम क्या होता है, जब आप एक प्लांट को कल्टिवेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, एंड उसके साथ आप क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं. मतलब आप उसको फर्टिगेट कर रहे हो ओनली विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. वो एक उसको बोला जाता है हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी. तो इसको प्रैक्टिस में काफी पहले से यूज किया जा रहा है, बट अभी ज्यादा इसको यूज क्यों किया जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें हाईली प्रोडक्टिव है, प्रोडक्शन इसमें बहुत ज्यादा आती है. कैपिटल इंटेंसिव मेथड है कि आपको इनिशियली आपको पैसा है जो कमर्शियली हायर लग सकता है, बट एट द एंड आपका क्या है, हाईली प्रोडक्शन आपका आ सकता है. टेक्नोलॉजी आपकी काफी साउंड होनी चाहिए. इसमें आपको नो हाउ पता होना चाहिए कि हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे की जाती है. तो ये सारी चीजें हैं जो हाइड्रोपोनिक्स में काफी ध्यान रखा जाता है. तो ये प्रैक्टिस क्या है, एक सस्टेनेबल है. सस्टेनेबल क्या है, जब हम नेचुरली प्रोडक्ट्स को यूज करके कोई भी चीज को लाते हैं और विदाउट हार्म किसी एनवायरनमेंट को करके हम उस प्रैक्टिस को यूज में लाते हैं. सो नाउ वी विल सी व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक्स हमने पहले ही बोला, जब हम कोई भी प्लांट को ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, और वाटर वर्किंग रहता है, वहां पे सिर्फ वाटर है जो उसको प्लांट को कल्टिवेट करने में हेल्प करता है. तो वी विल सी नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज हाइड्रोपोनिक सिस्टम. हाइड्रोपोनिक सिस्टम में अगर आप सॉइल सिस्टम और हाइड्रोपोनिक सिस्टम को कंपेयर करते हो तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि सॉइल सिस्टम में हम सिर्फ सॉइल का यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं और सनलाइट का यूज करते हैं. और उसकी हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तैयार होती है. सो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स plants are able to make their food. But what happens in the hydroponics? Hydroponics we only skip the soil. हमने सिर्फ सॉइल को निकाल के वाटर को मैनेज किया है प्रॉपरली. उसमें जो न्यूट्रिएंट्स लगेंगे विद द क्रॉप के हिसाब से हम उसको उतना न्यूट्रिएंट देके क्रॉप प्लांट को ग्रो करते हैं. उसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम या हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी बोला जाता है. इसमें कुछ भी ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है. सिर्फ सॉइल का हम यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वाटर को प्रॉपरली मैनेज करके उसमें न्यूट्रिएंट्स यूज करके हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम को यूज कर रहे हैं.
अब हमने ये देखा कि क्यों हम हाइड्रोपोनिक्स हमें करना चाहिए, वाई वी हैव टू अडॉप्ट द हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी, उससे हमें क्या बेनिफिट है, अगर कुछ बेनिफिट है तो उसके बाद ही हमें यूज करना चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो, बिकॉज हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी जो इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलिंग ऑफ द हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी इज कॉस्ट इफेक्टिव, उसमें काफी आपको इनिशियली कॉस्ट लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रीन हाउस होना बहुत जरूरी है, अगर विदाउट प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर आप हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, यूज में नहीं ला सकते हो, तो हम पहले देखेंगे क्या हमारे लिए वायबल है कि हम इतना सारा कमर्शियली हायर पैसे लगा के या अपना कमर्शियली प्रोड्यूस का इंस्टॉलेशन इतनी हाईटेक इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमें इससे क्या बेनिफिट है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं प्रोडक्शन, अगर हम देखेंगे अभी फॉर एग्जांपल एक अप्रोक्सीमेट मैंने ये निकाला है चार्ट, कि अगर आप कंपेयर करते हो सॉइल के साथ और इसके साथ, तो यू सी कि 100 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स 20 टाइम्स नहीं, 30 to 40 टाइम्स आपको हायर प्रोडक्शन आती है हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में एज कंपेयर टू व्हेन यू आर ग्रोइंग द प्लांट इन द सॉइल। अभी लेटुस का देखिए, अगर 28,000 प्लांट है तो 12 साइकिल्स में वो क्या दिखा रहा है आपको, 67,200 केजीज आप प्रोड्यूस कर सकते हो 12 मंथ में। तो दीज आर वेरी वेरी हाई प्रोड्यूस व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग दैट इन द हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी। सो इन द सॉइल, हम सॉइल में क्या है, बहुत सारे थ्रस्ट आते हैं, विंड है, मोटिलिटी हो सकती है, निमेटोड एक्शन आती है, और वाटर कंटामिनेशन हो सकता है। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो आउटसाइड फील्ड में जब हम ऐसी चीजें लगाते हैं तो क्या होता है, मोटिलिटी आने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू व्हेन वी आर ग्रोइंग दीज क्रॉप्स इन द हाइड्रोपोनिक सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोपोनिक्स में क्या रहता है, आप एक प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में इसको लगाते हैं, तो प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन की वजह से क्या होता है कि आपका जो प्रोड्यूस है आप उसे काफी हाई क्वालिटी में ला सकते हो, जब आप उसका आप उसको टेम्परेचर एक माइक्रो क्लाइमेट जब आप उसका मॉडिफाई करके उसको बनाते हो उसका, तो उसमें जो प्रोड्यूस आता है वो काफी बहुत अच्छा आता है, 30 to 40 टाइम्स बिगर आता है एज कम्पेयर्ड इन द सॉइल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे पैक चॉय है, कुकुम्बर है, चेरी टोमेटो है, इफ यू सी द प्रोड्यूस इज वेरी वेरी हाई इफ यू कंपेयर इन द आउटसाइड कल्टिवेशन। So these are the some of the factors कि why we are going to the hydroponic technology और क्यों हमें hydroponic technology को adopt करना चाहिए। हमने already issues हमने देख लिए कि क्या issues आती है, what are the issues जो इंडियन फार्मर्स को फेस करनी पड़ती है। ये इश्यूज की वजह से वी आर शिफ्टिंग टू द हायर टेक्नोलॉजीज, हाईटेक टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल एरोपोनिक टेक्नोलॉजी, हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी। So these are some of the issues. Then this is again hydroponic versus the soil. If we are saying, मैं आपको बता रही हूँ, आप हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी करिए, या आप किसी भी फार्मर को या किसी भी क्लाइंट को कल आप ये बोलेंगे कि आपको हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए रादर देन सॉइल, तो आप किस हिसाब से बोल सकते हैं उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट एंड वाटर सर्कुलेशन जो होता है वो 95% वाटर रिक्वायर जो होता है लेस होता है हाइड्रोपोनिक्स में। क्यों? we know that hydroponics is a closed system, hydroponic is a closed system, मतलब एक वाटर टैंक रहता है, जिस वाटर टैंक से आपको सोर्स तक प्लांट तक पानी जाता है, प्लांट से वापस जैसे उसको पास होता है, प्लांट को पानी एब्जॉर्ब करता है, प्लांट वापस उसी टैंक में वापस जाता है, फिर फिल्टर होके वापस उस प्लांट को आता है। तो वी सी दैट प्लांट कहीं रन ऑफ बाहर नहीं जा रहा है। तो हमने इसको 90 to 95% आप वाटर यहाँ पे सेव कर रहे हो इन द हाइड्रोपोनिक सिस्टम, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन द सॉइल। सॉइल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वी नो सॉइल क्या है, एक ओपन सिस्टम है। आप इरिगेट करते हैं, इट गोज अंडरग्राउंड, इट गोज एट द एंड इन द अंडरग्राउंड में चला जाता है वो, so which is not possible. अब conservation of nutrient and water is possible, yes it is possible in the hydroponics। आप nutrients and water को conserve कर पाते हैं, why? because I have already discussed कि एक टैंक रहता है, टैंक के साथ जब आपने डोजिंग सिस्टम उसके साथ ऐड की रहती है, उस वो पंप जब ऑन होता है, जब प्लांट को पानी चला जाता है, प्लांट के साथ पानी जब पास होता है, when it passes through the plant and it goes back to that tank, so what happens, we are conserving water as well as nutrients। और हमारे को इसमें क्या सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि अंडरग्राउंड जो पोल्यूशन होता है वाटर का बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजर्स, वो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा कम होता है, नहीं के बराबर होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के रन ऑफ बाहर जाते ही नहीं है, जो भी जाता है वो वापस उसी टैंक में जाता है और वापस उसी प्लांट को फिल्टर होके जाता है।
So yes, in the hydroponic technology, nutrient and water circulation, 95% we can require less water requirement is in the hydroponic system, and as well as conservation of water and nutrients is there with the help of the hydroponics technology, which is not possible in the soil. So these are the factors, these are the positive factors which I can say yes, we should adopt the hydroponic technology. एंड द थर्ड वन इज द रिडक्शन ऑफ द लैंड पोल्यूशन एंड अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन. एज मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया कि इसमें ना न्यूट्रिएंट बाहर जाते नहीं है, वो मतलब सॉइल में जाते नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता नहीं है इसमें, क्योंकि एक क्लोज सिस्टम है जो एक टैंक में हम अपना फर्टिलाइजर तैयार करके उसको रिसर्कुलेट करके वापस प्लांट को जाता है और वापस उसी टैंक में जाता है. सो इससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन एंड वाटर ग्राउंड जो अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन है इसमें बहुत ज्यादा कम होता है, नहीं के बराबर होता है. मगर सॉइल में कैसा होता है, सॉइल एक ओपन सिस्टम है जिसमें रन ऑफ होके प्लांट ये सॉरी वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे जाते हैं, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. क्रॉप स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं कुकुम्बर कल्टिवेट कर रही हूँ, तो मैं उसमें एबी टाइम कितना लग सकता है, फॉर एग्जांपल उसमें पोटैश मुझे कितना देना है, उसमें सल्फर मुझे कितना देना है, उसमें कैल्शियम मुझे कितना देना है, उसमें नाइट्रोजन मुझे कितना देना है, तो वो मैं स्पेसिफिकली उसका वेजिटेटिव ग्रोथ में कितना रिक्वायरमेंट है, फिर फ्रूटिंग में कितना है, और फ्लावरिंग में कितना है, फ्रूटिंग में कितना है, तो वो मैं स्पेसिफिकली उसको पर्टिकुलर क्रॉप को वैसा ही न्यूट्रिएंट बना के दे सकती हूँ. उससे क्या हो सकता है, मेरा जो क्रॉप का प्रोडक्टिविटी है वो काफी हायर आएगा, जो सॉइल में पॉसिबल नहीं है. ठीक है. फिर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्टिकल स्पेस, यस इट इज पॉसिबल इन द हाइड्रोपोनिक्स. फॉर एग्जांपल मैं इंडोर कल्टीवेशन, आजकल आपने देखा होगा इंडोर कल्टीवेशन काफी ट्रेंड में है अभी. बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंडोर कल्टीवेशन में हाइड्रोपोनिक सिस्टम छोटे छोटे लगाते हैं और घर पे ही बहुत सारी वेजिटेबल्स कल्टीवेट कर रहे हैं. सो दे डोंट वांट कि क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए नाउ वी आर यूटिलाइजिंग. और बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन होने की वजह से क्या है, लैंड एक्विजिशन इज डिफिकल्ट. सो फॉर दैट रीजन वर्टिकल स्पेस का जो यूटिलाइजेशन आजकल हो रहा है वो बहुत ज्यादा हायर है, और वो सिर्फ पॉसिबल किसमें है, हाइड्रोपोनिक सिस्टम में है, हाईटेक सिस्टम में है, मगर वो सॉइल में पॉसिबल नहीं है. तो ये एक पॉजिटिव वे है कि हमें हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए. अब जो क्रॉप है इट कैन बी ग्रोन वेयर नो सूटेबल सॉइल और कंटेमिनेटेड सॉइल इज देयर. यस, अभी हमें पता है कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम में क्या है, वी आर नॉट यूजिंग द सॉइल. अगर इफ वी आर नॉट यूजिंग द सॉइल, सो कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल पॉसिबल नहीं है, निमेटोड एक्शंस होंगी नहीं आपकी, मोटिलिटी जो इन वजह से होती है कंटेमिनेटेड सॉइल से या निमेटोड से, वो हाइड्रोपोनिक्स में बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब है ही नहीं. मगर जो सॉइल में क्या है, उस वजह से मोटिलिटी काफी हायर रहता है सॉइल में. एश्योरेंस रूट जोन एरिएशन का बिल्कुल है, क्योंकि देयर इज नो मीडिया, वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ए मीडिया, वी आर जस्ट पुटिंग दी जो कप्स रहते हैं उसमें हम अपना सीडलिंग लगाते हैं, सीडलिंग को उसमें फिर हम ग्रो करते हैं फर्दर हाइड्रोपोनिक सिस्टम में. तो उसमें एरिएशन फुली रहता है, 100% एरिएशन रहती है, और सिर्फ वाटर और इरिगेशन हम उसको देते हैं. मगर जो रूट जोन एरिया सॉइल में रहता है, अगर बहुत ही पानी बहुत हायर हो तो क्या होता है, डैम्पन्ड कंडीशन सॉइल में बन जाती है, जो एश्योरेंस करता है कि रूट जोन एरिएशन को वो रिड्यूस करता है. तो ये कुछ चीजें हैं जो सॉइल में क्या करती है, मोटिलिटी ला सकती है प्लांट के लिए. इफेक्टिव बजटिंग हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10,000 प्लांट लगाया, तो मैं ये आज आपको बोल सकती हूँ कि आफ्टर 4 months या 3 months अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, अगर मैं फॉर एग्जांपल कैप्सिकम लगा रही हूँ, तो मैं आपको बोल सकती हूँ 3 month के बाद मैं इतना प्रोड्यूस ला सकती हूँ और मेरा इतना इफेक्टिव बजट आ सकता है. वो सिर्फ हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में होगा. मगर यही चीज अगर मैं सॉइल में लगा रही हूँ, तो क्या इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है मुझे, मैं आपको बजटिंग नहीं दे पाऊंगी. क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी रहेगी. फॉर एग्जांपल रेन हो गई तो मेरा बहुत सारा क्रॉप खराब हो सकता है. तो ये कुछ ट्रस्ट है जो सॉइल में चैलेंजिंग रहती है, बट इफेक्टिव बजटिंग हम किस में कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं. वीडिंग जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती है वो ऑब्वियसली वीडिंग आती नहीं है हाइड्रोपोनिक्स में, बट सॉइल में बहुत ज्यादा वीड की प्रॉब्लम आती है. वो एक डिस्ट्रक्टिव पॉइंट है सॉइल में, जो प्लांट का ग्रोथ क्या करता है, रिड्यूस करता है. सॉइल बॉर्न डिजीजेस हाइड्रोपोनिक्स में हो नहीं सकती है और सॉइल में है. तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है हमारे सामने, पॉजिटिव फैक्टर्स है
जिससे हमें ये लगता है कि हमें हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपना क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस भी बढ़ा सकते हैं और अपना जो यील्ड है उसको भी हम अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम सॉइल के साथ कंपेयर करते हैं। ओके, इसको समझने के बाद अभी हमने ये देखा कि हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में रहता क्या है। हमने देखा कि वाटर का यूज होता है, न्यूट्रिएंट्स का यूज होता है। यही दो चीजें हैं जिसकी वजह से प्लांट ग्रो होता है। इसमें सॉइल नहीं होता है। सॉइल में ऑलरेडी वी ऑल नो, अगर आप सारे लोग एग्रीकल्चर से है तो सॉइल में बहुत सारे ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट का काफी टेक केयर करते हैं। बट हमें हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में सिर्फ पानी का यूज करते हैं। अभी मुझे कैप्सिकम लगाना है तो मुझे कैप्सिकम का प्रॉपर पता होना चाहिए। जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसमें मेरे को पोटैश कितना देना है, नाइट्रोजन कितना देना है, कैल्शियम कितना देना है, वो सारा मुझे प्रॉपर कैलकुलेट होना चाहिए। फिर उसका जो फ्लावरिंग होगा उसमें कितना चाहिए, फिर जो फ्रूटिंग होगा उसमें कितना चाहिए। तो वो चीज काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देनी है हाइड्रोपोनिक्स में। इसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ पानी के ऊपर हाइड्रोपोनिक्स चलता है। पानी में ही जब हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं वही न्यूट्रिएंट इनटेक करता है हमारा प्लांट और फिर हमारा प्लांट ग्रो होता है इन ए डिफरेंट स्टेजेस में। तो अब न्यूट्रिएंट सोल्यूशन हमारा कैसा होना चाहिए? वो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो है वो उसमें एक फॉस्फोरस और ऑब्वियसली आपको पता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ग्रो एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए प्लांट को। उसमें सबसे पहले 3 कौन से? हाइड्रोजन, जो उसको एटमॉस्फेयर से मिलता है। ऑक्सीजन, वो भी उसको एटमॉस्फेयर से मिलता है। कार्बन ऑब्वियसली मिलता है। अदर 14 कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। एंड माइक्रोन्यूट्रेंट वी ऑल नो आयरन, मैग्नीज, जो कॉपर, जिंक, बोरान, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम एंड निकल। ये बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं। ये मैं आपको कल बताऊंगी कि ये कम मात्रा में कम क्वांटिटी में क्यों लगते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट्स हमें ज्यादा क्वांटिटी में क्यों लगते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रेंट को माइक्रोन्यूट्रेंट क्यों बोला जाता है, उनकी क्वांटिटी ज्यादा क्यों होती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट ये है और इनकी क्वांटिटी ज्यादा क्यों कम क्यों रहती है, ये मैं आपसे कल प्रॉपरली डिस्कस करूंगी। इसके ऊपर मेरा कल एक अलग से ही एक प्रेजेंटेशन है। सो अभी हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी हमें कैसे मैनेज करनी चाहिए, क्योंकि वाटर एक एसेंशियल पार्ट है हाइड्रोपोनिक्स का। हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसमें डिजॉल्व सॉलिड्स होंगे वो 140 ppm से लेस देन होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा होंगे तो क्या होगा, पीएच हमारा खराब हो जाएगा। जो डिजॉल्व सॉल्वेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो स्कॉर्चिंग लाएंगे, वो प्लांट को पीएच उसका पूरा मतलब प्लांट विल नॉट एबल टू टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर। क्योंकि इतना ज्यादा हायर डिजॉल्व सॉल्वेंट्स रहता है तो ईसीपीएच के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है। ईसी इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती है जो न्यूट्रिएंट आप कितना सोल्यूशन में देते हो, कितना पानी में न्यूट्रिएंट्स देते हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो डिपेंड किस पे करता है? आपका प्लांट कौन से स्टेज में है, आपका प्लांट का ग्रोथ कैसा है, और आपको प्लांट को कितना ईसी का उसको देना है। तो वो EC and pH, pH is what? It is nothing but the power of hydrogen. Hydrogen pH मतलब acidity or alkalinity. We know from 1 to 14, from 1 to 7 this is the acidic pH, and from 7 is the neutral, and from 7 to 14 that is the alkaline. तो जो इस pH के दौरान रहते हैं फ्रॉम 1 to 14 वो हमारा pH रहता है। और pH कितना होना चाहिए? मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स का 5.8 to 6.2 रहता है। अब ये क्यों रहता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इसी लेवल में एक्टिव रहते हैं और प्लांट इसी लेवल में प्लांट न्यूट्रिएंट्स को ले सकता है इसी pH के लेवल में। वो मैं कल आपको प्रॉपरली बता दूंगी कि इसी लेवल में क्यों लेते हैं, 6.5 से ज्यादा क्यों नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अगर अल्कलिनिटी ज्यादा होगी तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखना है? एक तो वाटर क्वालिटी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब 140 ppm से कम होना चाहिए। दूसरा जो पीएच होगा पानी का वो 5.8 to 6.2 होना चाहिए, ना वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना वो ज्यादा अल्कलाइन होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो रहती है वो ज्यादा से ज्यादा 1.2 या 1.2 to 2 उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है,
जो रूट जोन रहता है उसमें हायर सॉल्वेंट्स होने की वजह से वो न्यूट्रिएंट अपटेक करने में प्रॉब्लम आती है। और टेम्परेचर और एनवायरमेंटल कंट्रोल जो रहता है वो भी नॉट मोर देन 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, अगर 30 डिग्री सेल्सियस से अबो जाएगा तो वो डीनेचुरेट होती है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है। इसीलिए हमें चार बातों का काफी ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम कभी हाइड्रोपोनिक सिस्टम बना रहे हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाने से पहले हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल। इन दैट न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वाटर क्वालिटी शुड बी लेस देन 140 ppm। सेकेंड, जो पीएच है पानी का वो 5.8 to 6.2 के बिटवीन होना चाहिए। थर्ड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है पानी की 1.2 to 2.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और टेम्परेचर एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल हमें उसका न्यूट्रिएंट का करना पड़ता है जब हम पानी में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। अगर वो 30 to 32 से ज्यादा डिग्री 28 to 30 डिग्री ज्यादा ऊपर जाता है टेम्परेचर, तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिजनरेट मतलब वो खराब होने लगते हैं फिर। अब हमने ये देखना है कि टाइप ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्या क्या है। हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स में क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या चीजें हम उसमें ग्रो कर सकते हैं, और उनके लाइफ साइकिल्स क्या है, उनके नंबर ऑफ साइकिल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई भी लीफी वेजिटेबल ग्रो करना है, मुझे पालक ग्रो करना है या कोई भी। One second, ma'am. Sorry to interrupt you, ma'am. Please explain in little bit in English. So, हाँ जी, okay, ma'am. Thank you. मैम हाँ प्लीज थोड़ा जी, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है मैम, थोड़ा इंग्लिश में आप कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। मैम कुछ बच्चों को इशू आ रहा है हिंदी इंग्लिश का, तो आप इंग्लिश में कर दीजिए थोड़ा। क्या इशू क्या आ रहा है? थोड़ा हिंदी का इशू आ रहा है, हिंदी का, आप इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा कर दीजिए। अच्छा, इंग्लिश में करना, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, टाइप ऑफ द प्लांट बेस्ड ऑन थैंक यू मैम। हाइड्रोपोनिक सिस्टम फर्स्ट। Okay, no problem. First of all, we know the type of the crop is leafy vegetables, fruiting and vine crops, flowering plants, and rooting vegetables and fungal. So these are the types of the plants which we are using in the hydroponic system. First of all, in the leafy vegetables, we take the example of spinach or any leafy vegetable. So it has only one cycle, that is the vegetative growth. It grows up to 40 to 45 days or not more than that, and then we cut it down and we use it in the for further cooking and in the form of salads or anything. Then second is the fruiting and vine crops, that comes in the five number of cycles. First, we have to prepare the seedling of the fruiting crop. For example, if I have to go with the tomato, if I have to grow with the cucumber or the capsicum. So first of all, how the life cycle will start. It starts from the seedling. I have to put in the seed. I have to grow I have to grow the seed. I have to that has the seedling has to prepare. Then the seedling has to come in the middle vegetative stage, then the strong vegetative stage, then it starts to bloom, and then blooming out, and the flowering stage comes. So fruiting and the vine crops comes in the number of cycles, in the five number of cycles. So in the first seedling cycle, we use the ebb and flow, that I will illustrate tomorrow properly, how the seedling will put in the ebb and flow. We grow in the seedlings in the ebb and flow. Then we shift the seedling from ebb and flow to the NFT or any other system which we are using. Third is the flowering plant. For example, gerbera, rose. It has two number of cycles. One is vegetative, and second is the flowering. So sometimes, yes, we can use with the help of the Dutch bucket system. We can grow the gerbera or the roses in the hydroponic system. And fourth one is the rooting vegetables. For example, potato, onion, ginger, carrot. We mostly it comes in the aeroponic system. So if we have to grow the potato tubers like that, we oftenly use the aeroponic system to grow the rooting vegetables. Now the fungal mushroom comes. Fungal mushroom has a different way of growing. So these are the four main type of the crops which we are adopting in the hydroponic system to cultivate. Now how to start the hydroponics?
what is the life cycle, what is the way of starting the hydroponics? First we choose the any seed. For example, if I have to go with the fruiting crop, for example like cucumber, tomato, capsicum, or chili plants like that. So it the first stage comes the seed plant. The seed has to prepare, the seedling has to prepare, then it germinates. It takes the germination of 20 to 21 days. After 21 days, when it completes, it comes into the hardening. When it comes to the hardening, then we have to, we have to transplant into the hydroponic system. So this is the cycle of choosing the plant, and then it goes in this way. And then at the time of the seedling, when it prepares, we transplant it to the hydroponic system. So this is again now the type of the hydroponic systems. What are the different types of the hydroponic system? We see active and passive. What is the passive? Where the energy is not to be required. What is the active system? Where the energy is to be required. For example, energy, how the energy is to be required. Likewise, I have already discussed with you in the hydroponic system what it happens, that we are using the UPVC pipes, PVC pipe, and we are connected those pipes with the nutrient media, and those nutrient media are to be functioned by the timers or the pumps. With the help of the pump, the plant, the water water goes to the PVC pipe and comes back to that nutrient solution. So with the help of some energy it works. So this is passive and the active system. In the active system, first one is the water culture. Water culture is to be further divided into four types. First is the NFT, which we call the nutrient film technique. Second is the DFT, we called it deep flood technique, and ebb and flow technique, and deep water, deep water culture. So these are the types, four different types of the water culture. So these are the hydroponic systems. Third one is the media culture. Media culture is what? Drip irrigation. For example, we are using the coco pit for the germination, and we are using the drips. We are applying the fertigation in the form of the drip system. So in the drip system, this is two types. One is the organic media, other is the inorganic media. In the inorganic media, what media we are using? Perlite, vermite, peat moss, and the sawdust. So these are differentiated into the two classes, into the two medias in the drip system. But in the water culture, in the hydroponics, we are just using the water and the nutrients according to the crop which we have chosen. Now, so first of all, and it is very important, we now have to see how to reach, what is the global reach. Relying on the hydroponic system, we see that the Holland, Spain, Australia, USA, Canada, Italy, these are all are focusing on the hydroponics. In the China, you see that the hydroponic technology is growing tremendously, and most of the crops which are cultivating in the hydroponic system, we can say cucumber. It is one of the chosen crop which are using in the hydroponic technology. Tomato, lettuce, strawberry, herbs, capsicum, cut flowers. So these are some of the basic examples which we can put in a hydroponic system, which we can choose to grow in the hydroponic system. Now we'll see now how what is the response in India, how a hydroponics is developing in India, what are the opportunities, what are the challenges India is facing to accept this hydroponic system. We all know when we when we commercially we are choosing the hydroponic technology, like we say it is very difficult to be in India to introduce the hydroponic system in India. Why? Because farmers cannot afford such huge installation cost. Because first of all, farmer has to first build the greenhouses, then inside the greenhouse the hydroponic system will install. So it goes the commercial cost goes up in the lakhs in a in for if you choosing the, for example, 1,000 square meter of the area, then it goes up to the I say
70 to 80 lakh of the investment in the initial investment, which is not possible for a farmer, for any medium farmer, to adopt such a huge technology. So these are some challenges also in India, that we are not the hydroponic technology is not growing so fast because of the high commercial rate. Now first we will see what are the opportunities in India, what is the development in India, how development is going in India. First we see we have a rich climatic condition. In that, what it favors as the market, we can market our produce very easily. We see that here in India, labor cost is in India is very low. Like labor, we can easily get the people for the for the functioning of these installations. Where destination for food sourcing is outsourcing huge. So acceptability of the food is also very easy. Indian producers can address both domestic as well as the international market is also very near to us, and we have a very good relations with the international market as well. So for example, Far East countries, USA and all, we can domestically and export our produce very easily. We have an intelligent manpower, operating protocols is very fast. So these are some of the developments we can see, and we can believe in ourselves that yeah, we have a good future with the hydroponic technology. So, what are the marketing channels in India? We'll see, and how it is favorable for India to go into the agri-business. First, we see that like the big groups like Mahindra and Mahindra, Reliance, Ambani groups, these are also going into the agri produce. For example, if you see that agri Mahindra Agri, Reliance, Ambani, they are into the agri businesses. So these huge big corporates are also going into the hydroponic technology. So this is what it's a good future for Indians. They have a good job opportunities. They have a good market in the export as well. So catalysts क्या है? What are the factors which enhance the hydroponic farming in India? First is big excuse me, big growth market we have. Population, as the population is very high, consumption rate is directly proportional to the population. Higher consumption capability is there. Moving towards quality of food rather than the price, quantity, or we are now people are moving to the organic system, and it is very easy to adopt in the organic system because we know all that bio fertilizers are now introduced. So we can introduce that in the hydroponic technology, and we can have a good organic food which is suitable for our health conditions as well. Low cost of the labor, yes, it is easy to gather the low cost of the labor in India because unemployment is very high. So these are some of the ways which is helpful for the hydroponic farming or adopting the hydroponic farming. Access to technology, yes, we can have a good access to technology in a very huge way. Everybody is going to the installations of the greenhouses. They have a good knowledge about the greenhouses. People do have that. Technical knowledge, yes, we should know the knowledge. Yes, we should know the know-how of the to know the technology, like how to use the technology. We should have a good manpower who have intelligent people can handle the technically very well the hydroponic system. So labor is very easy, quick hai. Market is very huge to us that we can produce the system, produce the crop, and we can market it out. These are some of the very good things we have seen, the positive things which the in India, if we adopt the hydroponic system, and we can get a very good produce also. We can good commercially we can need to overcome, and then only we can adopt such kind of a high technology. Okay, now see we will see the global reach. How the India, what is the global reach in the hydroponics?
how the other are other countries also getting into the hydroponics. We see that the big countries like Holland, Spain, Australia, USA, Canada, Italy, and China is growing heavily in the hydroponics. So we, and the main crops what they are using are cucumber, tomato, lettuce, strawberry, herbs, etc. In the these are the main and the chief crops which we are using for the cultivation in the hydroponic system. And these are the most very huge big countries which are getting into the hydroponic systems. So then after that, if we see second one, now we will see how the hydroponics is growing in India. What are the challenges, what are the opportunities in India in the installations of the hydroponics or growing the crop in the hydroponic system. First we see the opportunities, what is the opportunity and how India is developing. First the how the what the development in India is going on. First is the rich climatic condition, which is what gives us market favorable to the market such produce. So it favors us to market out our produce. Second is the easily availability of the labor cost. We see we know all know that in India it is very moderately low. We can afford the labor very easily, so it becomes an ideal destination for food outsourcing also. Third one is the Indian producers can address both domestic. We have a good domestic market as well as international market also. We have a good relations with other countries as well. For example, Far East, USA, and so many. We have an intelligent manpower. We know that we are technically very good people and adopt the fast operating protocols. So this is the way the opportunity and it is has a good development in India. First, which has a good destination for outsourcing, and third one is the Indian producers can address both domestic as well as international market and intelligent manpower. So this is the opportunity in India to adopt the hydroponic system. But what is the marketing channels now, how to market it? For example, I have cultivated the hydroponic system, and now where how to market such big channels, how to market this. First we all know that big agriculture, big groups like Mahindra, Reliance, Ambani groups, they are getting into the agriculture part. For example, we know Mahindra Agri, Reliance Agri, they are all getting into the getting into the agri. So what it happens, new job opportunities are creating. So we have a good market outsourcing also. International markets are developing very good. So these are some of the very good development which is going on in India, and this we call as the opportunity to introduce the hydroponic technology in India and to cultivate the crop in India. Second, we see what is the factors, what are the catalysts, what are the growing factors which helps us in hydroponic farming in India. For example, big growth markets have what? High population means directly proportional to the higher consumption capability as well. So it expands our growth market as well. Trend moving towards quality of food rather than price quantity. So we know in India organic food, we are getting into the organic foods. We are more focusing into the organic food, and it is very easy in India now. Because why? Bio nutrients are very easily available, which are in the liquid form, and which we can introduce directly in the hydroponic system, and we can focus more on the organic cultivation of the crop. Low cost of labor is available, manual labor is easily accessible, low cost setting, maintaining operations, easy communication, teaching arenas are available. So this is the low cost of the labor, which helps us to develop or to install such high tech hydroponic farming in India.
access to the technology is easy. Like for example, first everybody is now going into the installations of the greenhouses, and in the installation of the greenhouse is easy. Then hydroponic technology also they are adopting for the cultivation of their crop. Easy access to the fertilizers also, IPM technology. Now most of the people are very well versed with the IPM technologies, like what is the integrated pest management and how they are doing that. So it is very easy to assess now. Knowledge of how and and how, for example, what is hydroponic technology and how to use the different type of the hydroponic technologies. So the market is expanding very on a huge rate. The people are getting the technically very sound in this part of the technology. Challenges kya hai ab? So what is the basic challenge if we if we discuss about this? For example, if I have to convince any farmer going to the you just adopting to the hydroponic technology, it is not easy for a farmer to go for 50 to 70 lakh of the installation initially, and then he rely into the cultivation of the crop in the hydroponic technology. So for a farmer it is very difficult. For a medium farmer it is very difficult to introduce such high tech cultivation, such high tech hydroponic cultivation for a medium farmer. So capital cost is very high, as I have discussed. For a medium growing peoples, it is very difficult to install hydroponic technology. Like greenhouses, first we have to install, then after that we will introduce the in that hydroponic technology. So capital cost initially is very high. Then second is the trained manpower, because we cannot put any person, like for example any 12th pass, 10th pass, or any graduate or postgraduate which is not related to this field, and we just put it in the greenhouse and they are carrying the practices. They should know how to operate the system. First of all, how to operate the greenhouse, how to operate the environmental factors in the greenhouse. Then only that person will able to carry out the cultivation in the hydroponic technology. Education is required for this. We need the educated people, the people who are agronomists, the people who are agri people, agricultural based study they have done. So such kind of people we need to go to the high tech technologies. Attention to shifting market demands. What is the demand of a market? Which crop I have to do, and what is the market accessibility? That is very important for any crop to grow. For example, if I am living in the Himachal Pradesh and I am growing the lettuce, I know that the market demand is not to be suitable. I will not earn anything out of that, because the people have a different cultural practices. So if the same crop I am growing in Delhi region, I know I will get a very good commercially I will get a very good huge response. So why? Because the shifting of the market demand is very essential. Attention to the crop growing or cultural practices. Knowledge of IPM knowledge is very must, because we know how to reduce the pest, physically, biologically. It is very important, because if the pest will go inside the greenhouse, what happens? It will decrease the quality of the plant. Indirectly the mortality will come, and you should know, for example, if I have installed the greenhouse with fan and pad system, and I really don't know when to operate the pad, when to operate the fan. So for example, if the humidity levels are very high outside and I am operating both fan and pad system, what happens in the greenhouse? Obviously the humidity goes very high. So ultimately what it does, it will damage the crop. So I should have a good knowledge of and how to control the environmental factors in the greenhouse. So this is some of the activities how we can help. Like these are the ways how we can help to go with the hydroponic technology. First, we should rely on the turnkey commercial hydroponics. Soilless cultivation we should have to turn into. This is one of the factor which can help us to go with the high tech technologies. Second one is greenhouse systems. We have to introduce many of the greenhouse. For example, we have to introduce the greenhouses for the fruit cultivation, for the vegetable cultivation, for the herbs, aromatics, medicinal plants.
after that only the hydroponic technology is easy to adopt in the inside the greenhouse. Consultancy is very required. Yes, we need a good consultants who are have a good knowledge about the hydroponic system, about the soilless cultivation, like that. Training in basics of the commercial hydroponics is essential. Setting up broad acre, for example, hydroponic as soil food parks, which are facilities if we have to set up. So these can help us to introduce the high-tech technologies, supplies of backward greenhouse systems, hydroponic nutrients, soilless substrates. So these are the ways which we can help us to introduce the hydroponic systems. Thank you very much. If any query, you can ask me. Good evening, madam. I am Dr. Joseph here. Yes, good evening, sir. Yeah, yeah. I was just listening to your lecture today itself. It's very good and very interesting also. What I want to tell you is that please, you have come to the end today. Means you are going to the market. Instead of that, you can start in the beginning. What exactly how we have to initiate the project or hydroponics? Like you can take an example of one crop like tomato or a crop like a lettuce or anything what you have been telling, and you can in a PPT you can show us how we can actually grow the hydroponics. Yes, yes, sir. Yes, sir. That is actually. That we need. No, no. Global reach or thing you can just sell in one sentence. There is a good market, that is enough. But this practically, when you are going a training, what you have to tell is that you please take up one crop with the PPT and stepwise you can tell us. That will be useful for your for all of us to Yes, go ahead. yes, sir. It Yeah. comes to the tomorrow. Like the tomorrow topic is the different type of the hydroponic systems. Like in that, I have to illustrate every system very well. Like for example, NFT system, DFT system, deep water culture, ebb and flow system. So in that, I will put the photo, proper pictures, and I will illustrate each and every step how the NFT system works in for example, growing of the green leafy vegetables, how the Dutch bucket system works for the growth of the fruit plants. So tomorrow, that is that subject will come tomorrow. Tomorrow we have to discuss the different type of the NFT systems. Along with that, I will illustrate each and every step, sir. Okay, thank you, thank you. Because end use is okay. End use is yeah, because of that only we are going for this training to know Yes, yes, exactly initially how to start the show. yes. That is important. So you should Yes, mention. actually, it is only 1 hour of the yes, this presentation. So in a 1 hour, I cannot, end up with whole the process. So No, no, today I no. have I'm not telling introduced. you. No, no. Instead of talking marketing, you should have talked in the beginning. That's what I'm telling. Yes, yes, yes. Tomorrow, that comes to tomorrow subject, sir. Thank you, thank you. Thank you, Hello, sir. hello, Yes, ma'am. Yes, ma'am. madam. The presentation is Thank very you. good, but my suggestion is please, as the previous participant suggested, please go for a practical things. These theoretical things, little bit we know as we are all from agriculture background. These things we know, and it is available in literature. But practically at your farm or in your Yes, ma'am. greenhouse, what you are doing, you please focus on those things, especially nutrient management. Even yesterday also I was stressing upon that, Yes, and ma'am. how to prepare the solution Yes, in a yes, yes, small yes. scale and in Ma'am, it and comes. also in a large scale, Yes, yes. Tomorrow and it daily comes, ma'am. maintenance of. Hello, Yeah, ma'am. am I Tomorrow it audible? comes. Yeah, yeah. You are Yeah, audible, yeah. ma'am. Ma'am, tomorrow it will come like different type of NFT systems. What crop we have to choose for the different type of the NFT system. For example, if I have to choose the NFT system. So, for example, we mostly stress to go with the leafy vegetables, to growing of the leafy vegetables, and how everything will come in a stepwise. Like tomorrow, I will. Yeah, Uh, yeah, yeah. yes, yes. At least if you cover in a one crop clearly, that helps a lot. Instead of even the type of hydroponics what you are telling yesterday, that is also a little bit theoretical, I feel, because we know the types and all. Yes. You take one type and with one crop, all the management practices, if you discuss, it will be very useful for us. Okay, ma'am. Because practically we want to know. That's why I am attending this training.
Okay, no From problem. seed to seed, you Yeah, should tell. with your own experience, we want to learn from your own farm experience or your own setup experiences. Yeah, please Okay, ma'am, concentrate on no problem. practical Tomorrow I aspects, will please. share each and Uh, every detail. Okay, yeah, thank yeah. you. Thank you. Thank you. Thank you.